Hello everyone, so let's see now second part of this tulip landscape painting. So first we are starting with the tulips. For tulips we have used already crimson color and we have given the base also. Now we are starting to do details in the tulips. First I will do the details in the front tulips. Don't forget to subscribe to my channel and like this video and just post the link with your friends and family. Part 1 of this painting was a live session, so link for the part 1 I have given in the description box. अब हम थोड़े से लीव्स ट्राई करेंगे जो हमें अपर एरिया में लैंडस्केप के अपर एरिया में देना है. सो आई विल टेक नाउ द लाइट ग्रीन शेड. दिस लाइट ग्रीन आई हैव मर्ज्ड विद द वाइट and I'm going to give this light green just above area of the landscape which is nearer to the sunrise. तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन का हमने लीव्स कर दिया एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट वंस दिस इज ड्राई आई एम शोइंग द स्मॉलर साइज ऑफ ट्यूलिप्स. इट्स अ वेरी डिटेल वर्क. You have to literally place one on the other and one by one. Now I am making the purple shade. I have added crimson and blue and then I have added the white color to it, which is giving me pastel purple shade. So it depends which colors are you are using. आप जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये पर्पल शेड डिपेंड करता है. सो आपका पर्पल कांस्टेंट हो इसलिए आप सेम शेड्स यूज़ करो. जैसे अगर क्रिम्जन आप कोई एक कंपनी का यूज़ कर रहे हो तो वही क्रिम्जन शेड आप कंटिन्यू थ्रू आउट पेंटिंग के लिए यूज़ करो. Do not change the shades when you are doing the one painting. Now we will start doing the tulips and some part of the leaves using this purple shade. I am giving the variation using the white color. We are creating different tints in white with the purple shade. And this will entirely change our painting. Just to get the better view, I am removing now the masking tape so that it will be clear, and then I am just doing the cloud work, showing the silver lining using the white color on the clouds.